A very good morning and Jai Hind 12th class. Today I will teach you continue your chapter 3rd measurement of national income. In measurement of national income, student, in previous video we discussed expenditure method because you people are aware there are three methods for measuring national income. Which are three? आपने जूम क्लासेस में भी पढ़े थे. फर्स्ट इज वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड और थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन इसका. एंड बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड initially we calculate GDP, then after we calculate by the help of GDP NNPFC, which is known as national income. It is clear to students? You people aware or keep in your mind NNPFC, net national product at factor cost. NNPFC is known as national income. GDP national income नहीं होती. GDP is a gross domestic product at market price. But if we are talking about or examiner talking about national income, so national income is a NNPFC. And if we are talking about domestic income is a NDPFC. It is clear to students? What are the difference between NNPFC and NDPFC? NNPFC, net national product at factor cost, it is a national income. And NDPFC, net domestic product at factor cost, it is a domestic income. I hope student you are aware what is the difference between domestic income or national income. Yes, it is a difference is NFIA, net factor income from abroad. So if we add in domestic income NFIA, then we can easily get NNPFC, that is national income. So difference between domestic income or national income is NFIA, net factor income to abroad. So by the help of value added method, initially we calculate GDP MP, it is clear to student. And by the help of income method we calculate NDPFC, and by the help of expenditure method which we discussed today, by the expenditure method we calculate GDP MP. It is clear to student? And आप लोग बहुत अच्छे से आता है GDP MP से नेशनल इनकम पे कैसे आप जाओगे. सेकंड चैप्टर में हम लोग ये सीख चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, बिफोर द डिस्कसिंग ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, आई वांट टू वन मोर टाइम एक्सप्लेन योर फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. It is clear to students? So you can say there are four components. This is a component of expenditure method. Four component is here. By the help of these four components, we can calculate GDP MP. What is four component? Students, you are aware that in when we discuss in the chapter first, circular flow of income and expenditure and sector of the economy, there are four sectors in the economy. First is household sector, like consumer. Second is farm sector, like producer. Third is government, and last is rest of the world, that is other countries relationship export and import. Students, really national income or expenditure method is a summation of all sector of the economy. सारी इकोनॉमी में जितने भी चार सेक्टर हैं उनके एक्सपेंडिचर का समीशन ही जीडीपी एमपी होगा. लिसन अगेन, आई एम रिपीटेड अगेन स्टूडेंट्स. इकोनॉमी में फोर सेक्टर होंगे: हाउसहोल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज क्लियर? इन चारों सेक्टर के समीशन
किसका समीशन करना, इन चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर का समीशन ही जीडीपीएमपी होगा बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? यू कैन सी फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट फाइनल, पर्सनल भी लगा सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हम लोग जो मार्केट में जाके वेरियस थिंग्स परचेज करते हैं लाइक पेन, फैन, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी हम परचेज करते हैं, दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन कर रहा है उसको, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, सी से। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी जिन गवर्नमेंट, ये मैंने नीचे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जिन वेरियस हेड्स पर अपना एक्सपेंडिचर करती है, चाहे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किसी को सैलरी देने में हो, कोई पुल का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, रोडवेज, whatever, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, विच एक्सपेंडिचर, फाइनल, यू कैन सी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज विच सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय जी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? नाउ gross domestic capital formation, which is third sector of the economy, third or first or maybe second, no problem, आप sequence change कर सकते हो, but when we put the formula then I will write in a sequence. Yes, household sector हुआ आपका, government sector हुआ, next is producer और firm sector। producer किस लिए expenditure करता है बेटा, हमेशा producer कभी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करेगा। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? तो प्रोड्यूसर के लिए क्या जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट होता है। सो हियर इज जी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? ब्रैकेट में आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, सॉरी ब्रैकेट में आप लिखो फर्म सेक्टर, यहां पे इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट वन, इट इज वेरी सिंपल, नेट एक्सपोर्ट। इसको आप नेट एक्सपोर्ट ही लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट, और इट इज कैलकुलेट बाय एक्स माइनस एम। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? हियर इज एक्स माइनस एम ही यहां पे इसका इनिशियल वर्ड होगा। इट इज क्लियर? आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यू कैन सी फॉर द जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस वाली इक्वेशन को आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। दिस इज जीडीपी एमपी, यहां पर इसको मैंने ओपन करके लिखा है, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू समीशन ग्रोस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, this is C, household sector, plus government final consumption expenditure, G, government sector, gross domestic capital formation, I, producer और firm sector, and net export। इनका समीशन, ये फॉर्मूला आपका शॉर्ट में हुआ, GDPMP is equal to C plus I plus G plus X minus M। C for household sector, I for इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर, प्लस जी फॉर गवर्नमेंट, एंड प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? सो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई पुट हियर 2 स्टार, मीन्स इसका भी एक्सप्लेनेशन है। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, सो इसका भी एग्जाम्पल है, explanation है। You can see here gross domestic capital formation may be given in exam in 2 form or maybe 3 form।
either is write gross domestic capital formation, that you people have no problem, direct आप उसको I calculate करके put कर दोगे. But if examiner given net domestic capital formation, so we have to put here, we have to add here depreciation. Net domestic capital formation plus depreciation is equal to gross domestic capital formation. I hope यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और स्टूडेंट सपोज दैट एग्जामिनर ने जीडीपी एमपी ना कैलकुलेट करा के वो क्या कैलकुलेट करा रहा है एनडीपी एमपी. उस सिचुएशन में आप लोगों को डेप्रिसिएशन नहीं भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आई मीन्स फर्म सेक्टर में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली वो नेट वर्ड है तो यहाँ पर नेट ही कैलकुलेट होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. आई होप ये क्लियर होगा स्टूडेंट. वन मोर थिंग, gross domestic capital formation may be given in this form. In this form is gross domestic fixed. This fixed word is very very important. Gross domestic fixed capital formation. अगर बेटा देखो gross domestic capital formation and gross domestic fixed capital formation, what are the difference between both of them concept? Only fixed. अगर आपको gross domestic capital formation में fixed word given होता है तो students you have to add in gross domestic fixed capital formation a change in stock, and you people calculate change in stock by the help of closing stock minus opening stock. So students you see gross domestic fixed capital, अभी आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. gross domestic fixed capital formation plus change in stock is equal to gross domestic capital formation. एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है. इफ ये मिला है आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ऑन द अदर हैंड इफ एग्जामिनर गिव इन द क्वेश्चन पेपर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस यू हैव टू एड इन चेंज इन स्टॉक, क्योंकि फिक्स से वो तुरंत वेरिएबल बन जाता है. और स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर आपको ये देता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक भी देता है. तो आप लोगों को यहाँ पर ये आप अंडरस्टूड होने चाहिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड होने चाहिए स्टूडेंट्स कि जब उसने ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज इन स्टॉक इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है. आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर आपने इंक्लूड किया तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत होगा, बिकॉज इट इज डबल काउंटिंग. चेंज इन स्टॉक 2 टाइम काउंट हो जाएगा. तो आपको चेंज इन स्टॉक एग्जाम में या आपके क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, ये आपको देखना है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से. अगर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना, और अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो फिक्स वर्ड को देखते ही आप चेंज इन स्टॉक को इसमें ऐड कर दोगे. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. लास्ट पॉइंट यू कैन सी हियर, gross domestic capital formation is public divided into 3 part also. Maybe कभी कभी वो gross domestic fixed capital formation भी ना दे आपको, इन्वेस्टमेंट भी ना दे, इन्वेस्टमेंट के ओपन करके दे दे. इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट आल्सो. यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है उसने यहाँ पर दे दिया, भले वहां पे गवर्नमेंट का उसने दे रखा है, ये भी आप उसको इन्वेस्टमेंट में करोगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, प्लस बिजनेस इन्वेस्टमेंट जितना भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होगा और प्लस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट यू इजीली कैलकुलेट जीडीपी और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. अगर आपको ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप इन तीनों चीज को ऐड करके ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना लोगे. इट इज क्लियर. अगर ये चीज 2 गिवन है तो आप इनको ऐड करके ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना लोगे, और अगर ये ना गिवन है आपको ये गिवन है तो इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करके इस पे बना लोगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल ये एज इट इज मिलेगा, कोई घुमावा नहीं है आपको, कोई एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज मिलेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेट एक्सपोर्ट में भी. बस प्रॉब्लम कहां होगी, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसी का मैंने यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, देन आफ्टर आप इजिली क्वेश्चन कर जाओगे. It is clear to students? Now I will talk some precaution of the expenditure method. Then after we will discuss numerical today or tomorrow. It is depend on the time. Students, this is your last method of measuring of national income. For precaution,
I have to pause your video, then after I will start. Student, here is some precaution of expenditure method like income method and value added method. Same here, you can see here 5 points. If examiner give these points in question, you carefully read it and you have not included or included. You can see first is expenditure on second hand goods should not be included. जितना भी second hand goods है उसको हम national income में include नहीं करते. Why? Because second hand goods already included that year GDP in which that particular goods produced. It is clear to students. सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते. हाउएवर कमीशन ऑफ ब्रोकर, जो ब्रोकर का कमीशन है उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इसी ईयर की फैक्टर ऑफ सर्विस जनरेट हुई है. बट सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सेकेंड थिंग, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर शुड नॉट बी इंक्लूडेड. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट में जितने भी हम परचेज करते हैं बॉन्ड्स एंड शेयर, वो आपने परचेज किया उसको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है. हम फिजिकल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. जब आप लोग कंपनियां ओपन करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, मशीनरी परचेज करते हो, उस इन्वेस्टमेंट से ही कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है, ना कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से. सो स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर should not be included. You can keep in your mind. Next one, all government expenditure on transfer payments such as unemployment allowance, old age pension, etc. are not included in the national income because it is transfer income and we people add in national income only फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम को हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम में, ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करते बिकॉज ट्रांसफर इनकम वो ऐसी मिल जाती है बिना कोई गुड्स एंड सर्विसेज रेंडरिंग सर्विस प्रोवाइड किए. सो यू कैन सी ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. कोई अनएम्प्लॉयड है उसको बेनिफिट दे दिया तो इसका मतलब उसने प्रोडक्शन तो नहीं किया कंट्री में. ओल्ड एज पेंशन, किसी को ओल्ड एज पेंशन दिया उसको काउंट नहीं करोगे. स्टूडेंट्स, हियर इज वन मोर थिंग. अगर यहाँ पर रिटायरमेंट पेंशन है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन उसकी सैलरी के बदले में मिल रही है. ओल्ड एज पेंशन को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, रिटायरमेंट पेंशन को काउंट करेंगे. नेक्स्ट थिंग्स, स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा should not included in national income. This is should not be included in national income. So students, you can see next one, expenditure on all intermediate goods. You people are aware intermediate goods are not included in the national income. Expenditure on all intermediate goods and services like raw material etc. should not included. And last is imputed value of factor service provided by the owners for self use should be included. Suppose that कोई small scale manufacturer है, कोई फार्मर है, कोई शॉपकीपर है, उसने क्या किया, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया बिजनेस में. फैक्टर सर्विस, खुद की उसने लैंड दे दिया, खुद का इसने, जैसे आप लोग इनकम मेथड में मिक्स इनकम पढ़ते थे, खुद का उसने लैंड दिया, अपने फैमिली मेंबर लगा रखे हैं, उनकी इनकम को, क्योंकि उन्होंने बड़ा मेहनत की है, उन्होंने प्रोडक्शन किया, उन्होंने अपनी लैंड लगाई है, तो खुद को रेंट तो नहीं देगा लेकिन नेशनल इनकम में वो रेंट जनरेट होता है. imputed value of factor service provided by the owner for self use should be included. उसने बहुत सारे जो प्रोड्यूस करने में बहुत सारी थिंग्स, अपने फैमिली मेंबर की लेबर, अपना रेंट, अपनी बिल्डिंग, अपना ही लैंड वो लगा रखा है प्रोडक्शन यूनिट में, तो उसको आप ऐड करोगे. यू कैन सी अगेन imputed value of factor services provided by the owner for self use. ओनर ने यूज कर रखा है, सेल्फ यूज should be included. It is clear to student? So these 5 precaution of expenditure method, not only expenditure method, it is also for value added method and income method. I have already discussed I think this. So you can take a screenshot, then after
if time has come, I want to explain one question. Yes, here is 20 minutes, 10 minutes are left. So students, now we are able to solve the numerical of expenditure method. It is clear to student? कोई भी एक या दो numerical करते हैं, then after discuss in tomorrow your last period maybe I have to pause your video for writing a question. Student, you can see I have a question and we have 8 component of this question. Final consumption expenditure of household, that is 8,200. Government final consumption expenditure 3,500. Gross domestic fixed capital formation 2,200. Change in stock 900. Net export 700. Consumption of fixed capital, that is depreciation 800. Net indirect tax 200. Net factory income from abroad 350. And by the help of this data, we have to calculate 4 concepts related to national income: GDPMP, NDPMP, NDPFC, and NNPFC. So, student, you people are aware that by the help of एक्सपेंडिचर मेथड, ये आप लोगों को यहां से फाइंड हो जाएगा कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा. यहां पर भी एक्सपेंडिचर है, यहां पर भी एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट है और गवर्नमेंट फाइनल ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. तो ऑटोमेटिकली यू पीपल फाइंड दैट वी हैव टू यूज एक्सपेंडिचर मेथड. सो एक्सपेंडिचर मेथड से इनिशियली क्या कैलकुलेट होता है? जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ पुट द वैल्यू सी और यू कैन से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड बता रहा है, तो यहां पर 8,200 प्लस I. I means gross domestic investment, gross domestic fixed capital. अब स्टूडेंट्स इसमें चेंज इन स्टॉक है और फिक्स भी है. सो ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए वी हैव टू ऐड चेंज इन स्टॉक. सो डायरेक्ट कर दूं I यानी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2,200 प्लस चेंज इन स्टॉक 900. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? चेंज इन स्टॉक को हमने ऐड किया तब बना आपका ये आई. देन जी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3,500 और प्लस वेरी सिंपल नेट एक्सपोर्ट. मैंने आप लोगों को बोला था सिंपल, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलेगा, नेट एक्सपोर्ट 700. एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन इजिली कैलकुलेट जीडीपी एमपी. यू सी कितना हो जाएगा अपना 8,200 प्लस 9, 10 and 11,300 12,000 15,500. It is clear to students? I can see in yes 15,500. Now by the help of GDPMP you can easily calculate. GDPMP is 15,500. Now we have to calculate NDPMP. So by the help of GDPMP we people easily calculate NDPMP is equal to GDPMP minus or plus. What will we do? We have to minus, because all things are same, only difference here is net and gross. So we have to go on net. By the gross minus करेंगे depreciation. Where is depreciation? Depreciation is in the form of consumption of fixed capital formation minus depreciation. It is clear to student? So GDPMP is 15,500 and minus depreciation is 800.
it will be 14,700. It is clear to students? Next one is, here is 14,700. Next one is NDPMP and DPFC. C. NDPFC is equal to, by the help of NDPMP, what will we do? We have to minus MP from FC, minus NIP. So I will put here value. NDPMP is 14,700 and NIT, because MP to FC, NDP is same and we want to go MP to FC. MP is market price, FC is factor cost. तो market price में से net indirect tax को minus कर दे तो factor cost आ जाती है. Net indirect tax is given in the 200 minus 200 और is equal to 14,500. It is clear to students? Here is 14,500 rupees NDPFC. And D part, last one is NNPFC. NNPFC is national income. So for the national income, we can easily calculate by the help of NDPFC. NDPFC. What will we do? This is a national income or this is a domestic income. Difference between national or domestic income is, what is? NFIA. NFIA हमें ऐड करना है, माइनस करना है. We have to add because this is domestic income. Domestic income is narrow concept, and we want to calculate national income. National income is a wider concept, so we have to add NFIA. Put the value. NDPFC is 14,500 and NFIA where is here plus 350. What will we do? 14,850 rupees. 14,850 rupees. So we can tally the question. Your answer is 15,500. GDPMP, good. NDPMP 14,700. It is also good. NDPFC, it is 14,500. Very good. And NNPFC, it is 14,850. So students, I hope it is clear to you that how can calculate GDPMP, NDPMP, NDPFC national income. NNPFC national income or domestic income by the help of expenditure method. Today is you use expenditure method का अपने first question क्या है? In expenditure method it is very simple formula और it is very important. 90% expenditure method C question आता है simple. C plus I plus G plus X minus M. C for consumer or you can say household sector. I for investment or farm sector plus G for government or plus X minus M. This is net export. And students, if we want to extend this formula to C for private final consumption expenditure, I for gross domestic capital formation, G for government final consumption expenditure, and X minus M, that is export minus import. So I hope it is clear to students and sufficient for today. Tomorrow is your last lecture and I will explain more question of this chapter, this method, expenditure method, and summary of the all three method of measuring national income tomorrow. It is clear to students. So thank you so much. I hope you will find your question and you people are doing in your notebook. Complete your homework. And if you have any problem regarding to measuring of national income, you can ask me my personal number anytime students. आप लोगों के लिए मैं कभी भी जब भी आप करोगे, मे बी अगर मैं फोन ना उठा पाऊँ तो आप कॉल बैक कर लेना, मैं कॉल बैक करूंगा. बट आप लोग मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से समझो. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इन
बोर्ड एग्जामिनेशन देयर आर 10 मार्क्स का इसका वेटेज है, और अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स इन दिस यूनिट हैव 3 चैप्टर एंड 3 चैप्टर आर कंप्लीटेड। 10 मार्क्स में से 6 में तो आप लोगों का केवल नेशनल इनकम को मेजरिंग करने का क्वेश्चन ही आएगा। बाकी 4 मार्क्स में जो आप लोगों को पहले 2 चैप्टर पढ़ा है, सर्कुलर फ्लो, गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, intermediate goods, final goods, etc. So I hope it is clear to student. If you have problem, please contact me. Thank you so much.